السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے بعد چوتھے مرحلے کے تحت حماس نے مزید 2 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا۔ 183 فلسطینیوں کو بھی آج ہی رہا کیا جائے گا۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف عائد کرنے کا کیا اعلان۔ واشنگٹن میں طیارے اور ہیلی کاپٹر کے حادثے کے 2 روز بعد ہیلی کاپٹر کا ملا بلیک باکس، جانچ شروع۔ امریکہ نے پاکستانیوں سمیت 7,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو کیا گرفتار۔ ملک بدر کرنے کی تیاریاں بھی شروع۔ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا نسل کشی کے مترادف، اینٹونیو گوٹریس۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل 2 ریاستی حل، احتجاجی مظاہرین کا بیان۔ امریکہ کے فلیڈلفیا میں ایئر ایمبولینس طیارہ گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک۔ اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے گردن توڑ بخار کے انجیکشن کا سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی، سعودی وزارت صحت نے کی ایڈوائزری جاری۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یرغمالیوں کی رہائی کے چوتھے مرحلے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے مزید 2 اسرائیلی شہریوں کو رہا کر دیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے تحت حماس نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو خان یونس میں ریڈ کراس کے سپرد کیا، جبکہ تیسرے یرغمالی کیت سیگل کو غزہ سٹی میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 183 فلسطینیوں کو بھی آج ہی رہا کیا جائے گا۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ہمارے ساتھ کینیڈا کا رویہ اچھا نہیں رہا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اردن اور مصر غزہ متاثرین کو قبول کر لیں گے۔ And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. And in the other 2 cases, they're making it possible for this poison to get in, number 1. And number 2, we have big deficits, and it's something we're doing. And we'll possibly very substantially increase it. We're not. We'll see how it is. But it's a lot of money coming to the United States. As you know, we have about a $200 billion deficit with Canada, getting close to $200 billion. They've treated us very unfairly. And I say, why should we be subsidizing Canada? It's wonderful. I have so many friends in Canada. It's a great place. Is there a concession you're looking for, sir? No, we're not looking for a concession. And we'll just see what happens. We'll see what happens. And with Mexico, it's the same thing. We have a $250 billion deficit, and we have a lot of people coming into the border, and now we've largely stopped that, but we've stopped that ourselves. I think they've done a fantastic job. You've seen the numbers, they've dropped to almost 0. But we've suffered under the past administration for years and years. We've suffered with millions of criminals coming into our country. Criminals, people from jails from all over the world. They come through Mexico, and they come through Canada too. A lot of them come through Canada, and a lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl. China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places, mostly Mexico, but also a lot through Canada. امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ 1 فروری سے میکسیکو اور کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر 25%، جبکہ چین سے امریکہ بھیجے جانے والے سامان پر 10% ڈیوٹی کا اطلاق ہوگا۔ ٹیرف عائد ہونے سے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیشہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے بریفنگ میں کہا کہ امریکی صدر نے ابھی تک یورپی یونین کے خلاف ٹیرف نافذ کرنے سے متعلق قطعی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ پریس سیکریٹری نے بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے منگل کو امریکہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔
The federal government is maintaining the highest personnel and aviation safety standards. And I would also just say there's a cultural piece to this as well. If you are an American who has spent many years studying aviation and you graduate from school and you're an air traffic controller based on skill and merit, and then you apply for a job and you're forced to fill out a biographical questionnaire asking you the color of your skin and asking you where you're from in details that aren't relevant at all to the job description, I think that deteriorates the morale of people in this industry. And if you talk to people in this industry, they'll tell you that. In fact, many of them filed a lawsuit against the FAA a couple of years ago under Joe Biden's administration because they were denied positions because of this DEI hiring practice that was putting identity politics over merit and skills. That's unacceptable. And I think just to put a fine point on this, because this is the third or fourth question I've answered on this subject, when you are flying on an airplane with your loved ones, which every one of us in this room has, do you pray that your plane lands safely and gets you to your destination, or do you pray that the pilot has a certain skin color? I think we all know the answer to that question, and as President Trump said yesterday, it's common sense. The President has made it very clear that this is a common sense solution to solving some of the problems that we have seen at the Federal Aviation Administration, and also when it comes to many of the federal agencies across our government. People should not be hired based on their disabilities, based on their skin color, their gender, their race. None of that matters. What matters to this president and this administration is how well you can do your job, and the American people agree with that sentiment. So it's about competence, skill, and merit. And so the president is focused on ensuring that the most competent individuals, the best. उधर वाशिंगटन में तैयारे और हेलीकॉप्टर के हादसे के 2 रोज बाद हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हुक्काम ने तस्दीक की है कि उन्हें आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स हासिल हो गया है। जुमे के रोज मजीद 41 नाशें पानी से निकाली गईं, जिनमें से 28 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि दीगर नाशें उस वक्त तक नहीं निकाली जा सकती जब तक हुक्काम जहाज के मलबे को पानी से नहीं हटा देते। नेशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार का कहना है कि उन्हें अब तक हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। इसके लिए उन्हें मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करना होगा। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में शॉपिंग मॉल के करीब एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई, जबकि हादसे के नतीजे में 6 अफराद हलाक होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और इंतजामिया की जानिब से तैयारा गिरने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे के मुताबिक इदारे ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन से मुताल्लिक सदर ट्रंप के वादे पर अमल किया है। महकमे होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ट्रंप के ओहदा संभालने के पहले हफ्ते में 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया है। जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पर तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विज़ होने का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी से निकालना उनकी नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गज़ा की पट्टी में जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। दूसरी जानिब गज़ा से फ़लस्तीनियों की मुंतकिली के अमेरिकी सदर के बयान पर मिस्री शहरियों ने रफ़ा सरहदी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि फ़लस्तीनियों की दीगर ममालिक में ज़बरदस्ती आबादकारी के अमेरिकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती हल है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी ही सरजमीन से निकालने से खित्ते में मज़ीद कशीदगी फैलेगी। अमेरिका के महकमे इंसाफ ने कहा है कि उसने डच नेशनल पुलिस के इश्तराक से पाकिस्तान में ऑपरेट किए जाने वाले साइबर क्राइम के नेटवर्क का पता चलाया है, जो हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड के दीगर टूल्स बेचने में मुलविस है। अमेरिकी महकमे इंसाफ ने बयान में कहा कि रवां हफ्ते इस नेटवर्क की 39 वेब डोमेन बंद कर दी गई हैं और FBI इस मामले की तहकीकात कर रही है। Recklessly operated a drone that collided with a firefighting aircraft.
On January 9th, the Pacific Palisades fires were raging. Firefighters were desperately trying to stop the destruction being caused by the fires and save lives. Critical to those efforts were firefighting aircraft that were conducting all-out assaults in the areas surrounding the wildfires. Contrary to law and basic common sense, some individuals were recklessly operating drones around the firefighting relief efforts. They were operating drones in areas specifically being used by firefighting aircrafts conducting assaults against the fires. Today, we announced the filing of a federal criminal charge against one individual who was engaged in that conduct, a Los Angeles area man who launched a drone, lost sight of it, and that drone eventually collided with a Super Scooper firefighting aircraft, one of the most important firefighting aircrafts in the firefighting arsenal. After an intense and in-depth investigation by the FBI, federal prosecutors today filed a criminal charge against Peter Tripp Ackerman. Mr. Ackerman has agreed to accept responsibility and plead guilty to one count of unsafe operation of an unmanned aircraft. As part of his plea agreement, Mr. Ackerman had admitted that he acted recklessly, and his conduct posed an imminent threat to firefighting crews. Once he enters his guilty plea, Mr. Ackerman will face up to 1 year in federal prison. The ultimate sentence imposed will be up to a federal judge at the time of sentencing. उम्रा आज़मीन के लिए सऊदी अरब के किसी एयरपोर्ट पर दाखिल होने वालों के गर्दन तोड़ बुखार के इंजेक्शन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। सऊदी वजारत सेहत ने तमाम मुल्कों के मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि ज़ायरीन को ममलिकत आने से 10 दिन पहले वैक्सीनेशन लाजमी करानी होगी। एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल हमास जंगबंदी के बाद चौथे मरहले के तहत हमास ने मजीद 2 इसराइलियों को रिहा कर दिया। 183 फलस्तीनियों को भी आज ही रिहा किया जाएगा। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का किया ऐलान। वाशिंगटन में तैयारे और हेलीकॉप्टर के हादसे के 2 रोज बाद हेलीकॉप्टर का मिला ब्लैक बॉक्स, जांच शुरू। अमेरिका ने पाकिस्तानियों समेत 7,000 से जायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को किया गिरफ्तार। मुल्क बदर करने की तैयारियां भी शुरू। फलस्तीनियों को गजा से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ, एंटोनियो गुटेरेस। मसले फलस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती हल, एहतजाजी मुजाहिरीन का बयान। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। और उम्रा पर जाने वालों के लिए गर्दन तोड़ बुखार के इंजेक्शन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी, सऊदी वजारत सेहत ने की एडवाइजरी जारी। खबरनामे का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।